So hello everyone and welcome back to the channel. So this will be your QDD2 May 20, not May. अरे वाह, QDD2 September 24. तो बहुत सिमिलर है, लाइक जेन्युइन आइडेंटिफायर का ये बहुत सिमिलर है, सेम क्वेश्चन लगभग मान लो. तो पहला वाला जस्ट हमें देखना है सेम क्वेश्चन जो जेन्युइन आइडेंटिफायर में था कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स तुम्हें गिनना है. वी जस्ट नीड टू काउंट हाउ मेनी एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स आर देयर. एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं ऑलरेडी इस थ्योरी में बता चुका हूँ, लास्ट PYQ में बता चुका हूँ. एवरी टाइम अ फंक्शन इज कॉल्ड वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज पुश्ड इनटू द स्टैक, है ना. तो हमें जस्ट देखना है कि कितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है. सो फैक्टोरियल इज 5, फैक्टोरियल 5 कॉल हो रहा है एंड एवरी फैक्टोरियल रिकर्सिवली कॉल्स another factorial method with number -1. So first it will call 5, so 5 is called here, then it will call for 4, then -1, then -1, then -1. So here there are 5 function calls for the factorial and another one like the last function call is for the main itself. Okay, क्योंकि main भी at the end एक function ही है, right? So last function call उसका होगा main का. So in total 6 function calls are being made, so that's why एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स भी 6 होंगे, है ना. cool. ये तो बस थ्योरी है. इनहेरिटेंस इज 6, रिलेशनशिप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है ना. रिलेशनशिप इंटरफेस ये गलत बात है ना, रिलेशनशिप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है ना. इनहेरिटेंस का मतलब ध्यान रखना. बी का 7 पॉइंट्स द स्टार्ट ऑफ प्रीवियस एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ये वीक 1 का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे लिखा हुआ है. Lifetime is obviously duration of time with when a variable available in the memory, है ना. This theory है. And D is enable caching of bug in source code early on. Obviously अगर तुम int age लिख के तुम इसको string s दे रहे हो तो obviously यहीं पे तुम्हें error बता देगा, तो ये तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, है ना. तो that's why it enables catching of bug in source code early on, है ना. Next same question है जैसा कि हमने पिछले में देखा था, केस मैच करना है ना. तो सबसे पहले डू वाइल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था. इट विल रन एटलीस्ट वंस बिफोर कंडीशन चेक. है ना. सो सबसे पहले जैसे ही 5 हम इसको कॉल करेंगे बेसिकली, तो ये 5 माइनस हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा. तो सबसे पहले होगा 5 - 1, 5 के लिए रन होगा. वो आई की वैल्यू n की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी, फिर 4 के लिए रन होगा जो कि 3 होगी. ऐसे करके रन होता रहेगा एंड इट विल कीप रनिंग अंटिल इट इज ग्रेटर देन 0. सो 1 के लिए इट विल रन, है ना. ये बात ध्यान रखना. दिस इज वेयर people get confused कि it will run for 1 when the int counter is equal to 1. So it will run this because it is still greater than 0. So so for 1 it will run and then it will do 0. Okay, so next loop it won't run because 0 is not greater than 0. So यहाँ पे stop होगा ना, तो final value actually 0 होगी ना कि 1 होगी, ये ध्यान रखो. So counter finally is 0 and क्योंकि 0 है it will match this case, it will print this and it will break out of the loop, है ना. So that's why counter 0, है ना. Cool. Okay, so next question is same, हमें output बताना है. Okay, सबसे पहले जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा ध्यान रखना, जस्ट जंप टू द मेन. ओके, जैसे तुमने मेन पे जंप किया, फर्स्ट थिंग यू सी इज, ये वाला कलर नहीं रहता है इसमें, थोड़ा ये वाला कलर रहता है. मेन पे जंप करते हैं. सो फर्स्ट थिंग यू सी इज वी आर गिविंग अ रेफरेंस फॉर डॉग बट वी आर स्टोरिंग अ कैट. दिस इज फाइन बिकॉज कैट इज अ सब क्लास ऑफ डॉग, है ना. This is fine, no error here. Okay, then we call obj.sound. As soon as we call obj.sound, what will happen is it will compare dog and cat. Okay, so it goes to dog, goes to cat, compares them. So first it searches for sound. Okay, sound is not here. Okay, there is no sound here. Okay, it checks here, it also doesn't have a sound. Okay, but it extends animal. Okay, so it inherits the default implementation of this. Okay, so if you call dog.sound and since no sound definition is given inside the dog class, what it will do, it will implement the default function here. So it will print the first line, that is this line, makes a sound. Okay, so obj.sound, this line gives you a print statement called make a sound.
So after that we call obj.play. It will do the same thing again. It will compare dog and animal. Dog and cat. Okay. So it goes to dog. It finds the play here only. Okay, fine. Since there is no play here, it will call this function. Okay. So it plays fetch. This is your second line of output. After that, finally, it calls obj.guard. Okay. Again, it compares dog and cat. In dog, it finds guard. Okay. But the guard function is also present inside cat. Okay. So since it is present both in dog and cat, so it takes the actual object implementation. Okay. So it takes the guard from here. So this is your third line of output. Okay. So first is make a sound, then plays fetch, then guards the garden. Okay. Make a sound, plays fetch, gets the garden. Guards the garden. Okay. Fine. Next, same questions है जैसे September, इसलिए I'm going a little fast because literally same question. I have taken a lot of time there. यहाँ पे मैं उतना time नहीं बताऊंगा क्योंकि literally same questions है. So next thing, जहाँ पे जरूरत हो तो मैं बता दूंगा ना, ऐसा टेंशन मत लेना कि लाइक थोड़ा अगर अलग क्वेश्चन है तो मैं बताऊंगा नहीं, बता दूंगा. Okay, so choose the correct option. You need to choose the correct option. Same. First, jump to mean. What it is doing, callback function वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना callback function. So it is creating a new pizza. Okay, P1 नाम से. It goes to the constructor. So there is no constructor defined for pizza, right? यहाँ पे कोई constructor defined नहीं है. Just दो function defined है. That's why it is just creating है ना. खुद से default constructor connect वो कर ले लेगा Java, and then it calls p1.orderPizza. यहाँ से खेल शुरू होता है. So p1.orderPizza, as soon as you call this, what it does, it creates another object of class pizza maker, है ना, with m as the variable. Okay, so m variable है. So basically m is now a object of pizza maker class, and what we are passing as input, whatever we got as an input. Okay, not as input, whatever this object is, whichever object is calling this function. Okay, whichever object is calling this function, it is being passed as an input. Okay, got it? So basically p1 has called this. अरे यार, p1 has called this. अब क्यों हो रहा है? p1 has called this. So m is equal to p1. Okay, यहाँ तक बस उतना काम किया है हमने. अब हम क्या कर रहे हैं, m dot prepare pizza. So now m is indeed calling a function called prepare pizza. Okay, m is pizza maker. We go to pizza maker class. We call the prepare pizza function. Okay, so as soon as you call this, it gives you one. Okay, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया. On this line. Okay, forget about this line for a second. On this line, as soon as you call the constructor, this is constructor, right? So जब हम constructor को call कर रहे हैं, so basically we are passing an input of object as input to this, है ना, and then we are just setting it. Okay, so क्या हो रहा है, basically m is equal to p1 तो यहाँ पे set हो गया, and then जब हम यहाँ पे run कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, piz is equal to p और p में क्या है m, and m ओरिजिनली क्या है p1, है ना. तो इस तरह से हायरार्की हो रहा है ना. सो बेसिकली pizza is equal to p is equal to m is equal to p1, सारे सेम है, सारे सेम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं ना. सो यहाँ तक हो गया. अब हम ये वाला लाइन देख रहे थे, प्रिपेयर पिज्जा. सो प्रिपेयर पिज्जा में फर्स्ट हमें आउटपुट मिल गया, एंड देन इट जस्ट कॉल्स द अलार्म. सो piz.alarm. So piz कॉल कर रहा है, and what piz is originally it is p1. Okay, so as soon as we call this, it goes back to here. Okay, and it prints pizza collected. Okay, यहाँ पे ये कॉल हो गया pizza collected. तो ये सेकंड तुम्हारा आउटपुट हो गया है ना. एंड आफ्टर दैट ये फाइनल लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी. दैट इज थर्ड लाइन ऑफ आउटपुट, दैट इज पिज्जा सर्व्ड, है ना. सो पिज्जा प्रिपेयर्ड, पिज्जा कलेक्टेड, पिज्जा सर्व्ड, प्रिपेयर्ड कलेक्टेड सर्व्ड, prepared collected served, है ना. फाइन. आफ्टर दैट वही सेम क्वेश्चन है. हमें देखना है कि लाइक हमें ऐसा कोड यहाँ पे लिखना है which returns these two objects equal, है ना. कूल. उसने बताया मैंने कि कैसे हो रहा है. आई हैव explained that in the last PYQ. So okay, so when will two cars of the same model when their model and VIN number are equal? Okay, fine. हमें equals का object define करना है which will basically compare. Okay, so जब भी हमारा compare करने का बात आता है, whenever we say we are comparing two things, we have seen in theory that what it does is
those two objects or those two objects need to be of same class या compatible होने चाहिए बेसिकली. मतलब जैसे नंबर को नंबर के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, कैट को कैट के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, एज राइट. सो फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली यू नीड टू टाइप कास्ट, है ना, क्योंकि इसके दो रीजन है ना. एक तो जेनरिक में करना भी चाहिए और दूसरा यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोल रखा है कि वी आर पासिंग अ जेनरिक ऑब्जेक्ट एज एन इनपुट टू दिस, है ना. सो सिंस वी आर पासिंग एन generic object, we obviously need to typecast it to car so that we have car1 and car2 and we can compare between those two. Okay, so then तो first step तुम्हारा हो गया typecast to car for comparison. Second हो गया तुम्हारा actually compare करना. Third हो गया तुम्हारा return result करना. एक तुम check instance मतलब सॉरी एक तुम ऑप्शनल चेक कर सकते हो बिल्कुल फर्स्ट में ना, जीरो मान लो, जीरो में कि तुम इंस्टेंस को चेक कर सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है या नहीं, या कार का इंस्टेंस है या नहीं, है ना, तुम चेक कर सकते हो ऐसे. तो ये क्यों फेल किया, टाइप कास्ट नहीं है इसमें, है ना. दिस फेल्स बिकॉज देयर इज नो टाइप कास्ट. ओके, सो फर्स्ट ये वाला पास कर रहा है बिकॉज सी फर्स्ट इज चेकिंग फॉर इफ इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ कार, then it is explicitly typecasting to car and then checking the model and win number and then it is returning the result. Okay, fine, so that's why this is right. Okay, again वही I think ये अच्छा ये अलग है. So choose the correct option to fill in place a code block to instantiate instance variables of class book. Okay, so basically it is asking for us to create the variables. Okay, instance variables for class book. Okay, so we need to see that firstly we need a constructor, है ना, and this takes two input, so obviously there should be kind of two inputs here. Okay, है ना, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें as soon as you call the constructor it is having two inputs, है ना. तो basically you need to pass two variables here, है ना, दो चीजें स्टोर करने के लिए you need two variables. Simple. so अब ये कोई एग्जांपल पे करेगा, है ना. सो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर पे दो काम हो सकते हैं. एक तो तुम वापस इसको डिफाइन करो, है ना. दो तरीके से हो सकते हैं. फर्स्ट यू कॉल द सुपर, है ना, फर्स्ट यू कॉल द सुपर, क्योंकि सुपर में तुम ऑलरेडी नेम यहाँ पे डाल रहे हो, है ना, मतलब नेम यहाँ पे तुम ऑलरेडी सेट कर रहे हो. तो एक काम कर सकते हो तुम डायरेक्ट सुपर कॉल कर दो. फर्स्ट मेथड इज दैट यू कॉल द सुपर टू सेट जस्ट द नेम. ओके, and then you are taking another one that is author and then you initialize a variable called author or something whatever you want and then assign it a, है ना. sorry first method is you do this, you call super, then as another variable author is assigned to a, है ना, a is assigned to another variable author, है ना. ये तुम्हारा first method. Second is you explicitly create new variables, है ना, कि name is equal to something, name is equal to n, है ना, something like that. You explicitly do that. You can do this, it is not wrong, but this is more better. This is better than to do that. Okay, because you're already defining it. So obviously memory allocation या memory usage का अपना फंड आ जाता है when you're working at the higher levels. So उस हिसाब से better to call super. Okay, fine. So यहाँ पे तो नाम सेट ही नहीं किया, name hasn't been set, super hasn't been called, so this is outright wrong. Here करेक्ट, ये करेक्ट है, मतलब करेक्ट क्या, दिस सीम्स करेक्ट, बट आई थिंक सुपर इज मतलब पहले तुम्हें कॉल करना पड़ेगा सुपर शुड बी एट द टॉप, है ना. एवरीथिंग फॉलोज दिस. ओके, चैट जीपीटी ने ये बताया, मेरे को समझ में नहीं आता कि एवरीथिंग फॉलोज दिस, है ना. मतलब अगर तुम सुपर कॉल कर रहे हो तो वो फंक्शन डेफिनेशन के टॉप पे होना चाहिए, है ना. तो दिस इज फाइन इसलिए, है ना. इसका अगर किसी को मतलब अगर ये सही है डिस्कोर्स पोस्ट मिले या किसी को पता हो कि लाइक ये इसका एक्चुअल रीजन क्या है गलत होने का, तो बता सकता है. बाकी चैट जीपीटी ने ये बताया, मेरे को ये कंफर्म नहीं था, है ना. उसने ये बताया कि अगर if you are defining a function and you are calling super inside that function, then super should every other function should every other definition or assignment should follow the super calling. Okay, ये वाला भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने बताया था वहां पे. तो वहां पे क्या हो रहा था, उसमें हमने ऑथर्स चेंज किया था, याद है, लास्ट PYQ में हमने ऑथर्स को चेंज किया था, ऑथर्स के इस वाले पोजीशन को हमने चेंज किया था, याद है. सो यहाँ पे बस वही सेम काम कर रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ ऑथर्स वी हैव हियर टॉपिक्स, इंस्टेड ऑफ ऑथर्स देयर वी हैव टॉपिक्स. ओके, सो एंड वी आर चेंजिंग द सेकंड इंडेक्स. ओके, which is basically the index at 1. Okay, ये वाला चेंज हो रहा है ना, बस दैट इज ऑल. और यहाँ पे चेंज क्यों हो रहा है,
I have explained this in detail in the last PYQ, so I will just go over this once, है ना. और why is it being changed? Because topics is one string, है ना. मेमोरी में topics is one specific memory allocated, है ना. topics को एक specific memory allocated है, and topics is just that. and बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पे basically जो कि this dot topic हो गया या कोई सा भी object जो actually topics को ले रहा है या फिर topics is being assigned to it, it is basically just a reference, है ना. It is basically just a reference, and any change to topics will reflect in every object that is referring this, है ना. तो इसलिए as soon as you change the topics, it will be reflected for every object. But name is not like that. Name, हर object का name unique है. obj.name is unique to the obj, है ना. तो इसलिए जैसे ही तुम नाम change कर रहे हो, it is not changing it for every course, for every course, it is just changing for that specific course which is calling that. Okay, so that's why first is Java, second is advanced Java, because course 2 name is being changed to advanced Java, and topics at index 1 is changed to abstract classes. तो इसलिए Java abstract classes, advanced Java abstract classes, है ना. ऐसे print होगा. This is how it is being printed. Why? Because topics is one list. Topics is a specific memory has allocated and it is just there, है ना. Topics change नहीं हो रहा, and every object is just referencing that, and since the reference is being changed, so every object that points to that object will see the change reflected in them. Okay, next, choose the correct option. Basically you need to check the errors and everything, है ना. Okay, यहाँ पे वो important concept आ जाता है. सब class can be used in place of parent but not vice versa, है ना. मतलब अगर we are expecting a parent class, subclass can be used in place of that. But if a subclass is expected, a parent class cannot be put there. Okay, सबसे easy तरीका check करने का क्या है? Guitar, electric guitar extends guitar, so guitar is parent and this is subclass, है ना. ऐसा ध्यान रख सकते हो कि अगर लेफ्ट पे तुम्हारा पेरेंट है तो राइट में तुम्हारा सब क्लास या पेरेंट होना चाहिए. अगर लेफ्ट में सब क्लास है LHS RHS ऐसे मान लो ना. दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ ट्रिक, ध्यान रख लो. P सब क्लास, दिस इज फाइन. अगर LHS पे तुम्हारा पेरेंट है तो राइट में तुम्हारा सब क्लास भी हो सकता है, पेरेंट भी हो सकता है, दिस इज फाइन. बट अगर LHS पे सब क्लास है तो यहाँ पे तुम्हारा सब क्लास ही होना पड़ेगा, है ना. दिस इज फाइन. सब क्लास पेरेंट, दिस इज रॉन्ग. ध्यान रख सकते हो ये LHS RHS इस तरह से, है ना. सो पेरेंट ऑब्जेक्ट है. सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर, वी आर एक्सपेक्टिंग अ पेरेंट हियर. हमने यहाँ पे गिटार ऑब्जेक्ट गिटार क्लास दिया है, सो हियर वी आर एक्सपेक्टिंग गिटार. बट सिंस इलेक्ट्रिक गिटार इज अ सब क्लास, सो वी कैन अलाउ दैट. सो दिस इज अलाउड है. पेरेंट की जगह सब क्लास हम डाल सकते हैं. फाइन, दिस लाइन इज फाइन. उसका मतलब देन obj.play. As soon as we call obj.play, it compares guitar and electric guitar, है ना. और डॉट प्ले, अब डॉट प्ले दोनों जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सो इट कॉल्स दिस वन. ओके, इट कॉल्स फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना. एक्चुअल क्या कंटेन कर रखा है उसमें, है ना. As soon as it calls this, it calls super.play. तो super.play goes here again, and instead it again calls super.play, which again will go here, है ना. So at the end first line of output तुम्हारा ये होगा, है ना. मैंने यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं. रेड नंबर्स आर के एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है. रेड नंबर्स आर फॉर एग्जीक्यूशन. ओके, यहाँ पे मैंने मतलब समझाने के लिए. जैसे फर्स्ट यहाँ पे कॉल हो रहा है ना, दिस इज बीइंग कॉल्ड, दिस इज इंडीड कॉलिंग दिस वन एंड दिस इज इंडीड कॉलिंग दिस वन. ओके, सो दैट्स व्हाई फिर ये रन हो रहा है ना. प्ले इंस्ट्रूमेंट आउटपुट आया एंड देन फोर्थ में ये वाला कॉल हो रहा है सिस्टम डॉट आउट, है ना. क्योंकि इसने कॉल किया है. फिर यहाँ पे ये रन होने के बाद कंट्रोल वापस इसके पास आएगा. सो आफ्टर दिस इज रन, finish execution, so the control will be sent back to this the function call which has called it. Okay, that's why यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा कंट्रोलर, है ना. so that's why it is calling this one. so तुम्हारा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट, सेकंड लाइन ऑफ आउटपुट. फिर ये पूरा हो गया, देन द कंट्रोल रिटर्न्स टू दिस फंक्शन, सो इट प्रिंट्स दिस लाइन. सो दिस इज योर थर्ड लाइन ऑफ आउटपुट. तो ये तीन लाइन तो हो गए. आफ्टर दैट वी आर कॉलिंग obj.play rock song, है ना. इट चेक्स obj.play with an input. ओके, गिटार में इसको मिल गया एंड डायरेक्टली इट फाइंड्स इन गिटार, बट इट डज नॉट फाइंड इट हियर, सो दैट्स फाइन बिकॉज गिटार हैज इट डिफाइंड, है ना. सो इट जस्ट प्रिंट्स दिस लाइन. ओके,
sorry. It finds in guitar, okay. It checks guitar for this one, okay. Play with an input. It sees that it has defined, but also यहाँ पे भी है. This has also defined a play with play method with the input, okay. So since दोनों जगह same है, it will check what is the actual object it contains, है ना. So actual object is electric guitar, so it calls this function, okay. So इसलिए fourth line of output is this, okay. Fine. Again choose the correct option, है ना. Car extends vehicle, so car is subclass, vehicle is parent, है ना. Parent subclass, this is fine. This case parent subclass, this is fine, है ना. So line 1 no error, है ना, no error, fine. Obj dot start engine, obj it checks vehicle first, it finds start engine, okay, and then it checks car, it also finds start engine, okay. Since start engine is found both at both places, it will call the actual object, okay. So this is your first line of output, okay. This is fine. Line 2 ran. Now we call obj dot horn. It checks vehicle, it doesn't find horn here, okay. It doesn't even define it, okay, like void horn or something like that, okay. It hasn't even defined that, okay. So that's why since the parent class does not even contain the object horn, so that's why it will give you error. No horn. If had, fine, would have called car dot horn, because car में भी defined है ना. So if यहाँ पे बस definition भी दे रखा होता, मतलब बस initialize भी कर रखा होता, तब भी it would have been fine, okay. तो ये call होता है ना. But since यहाँ पे initialize भी नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, horn is just absent there, इसलिए ये तुम्हारा compilation error देगा. Line 3 generates compilation error because the method horn is not defined in vehicle class, okay. आफ्टर दैट ये सेम जैसे हमने किया था. आई थिंक किसी को डाउट भी था, व्हाट्सएप पे पूछा था. बेसिकली लाइन 1 में एरर है क्योंकि फाइनल इज डिफाइंड, ओके. डबल कैलकुलेट फेयर, ओके, बट कैलकुलेट फेयर यहाँ पे ऑलरेडी फाइनल एक्सेस मॉडिफायर दे रखा है. सो एज सून एज यू गिव अ फाइनल मॉडिफायर टू एनीथिंग, बी इट अ वेरिएबल, बी इट अ मेथड, नथिंग कैन ओवरराइड दैट, ओके. थ्रू आउट द कोड नथिंग कैन ओवरराइड दैट, ओके. फाइन, दैट्स व्हाई कैलकुलेट फेयर यहाँ पे एरर आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ओके. So line 1 gives you compilation error because of final access modifier. Line 2 gives you error, why? Because it is trying to call base fair. But base fair is private, है ना? Base fair is private, so the subclass cannot access the private variables of the parent class, okay. So that's why line 2 gives you error because it is private, okay. Third is यहाँ पे subclass. We are giving a subclass reference here, so here there should be a subclass only, but we are passing a parent, so that's why this is wrong. So line 4 also gives you compilation error, class exception error or something like that. Class हाँ कुछ ऐसा error आता है. So ये ध्यान रखना, तुम्हें false देना है ना. So देखो, line 1 generates compilation error, है ना, true. Line 1 actually generates compilation error. Line 2 generates compilation error. Yes, line 2 generates compilation error. Line 3 generates compilation error because a variable of type vehicle cannot refer to an object of type car, okay. But this is false. Line 3 is correct, है ना. This is saying that line 3 generates compilation error, but line 3 does not generate a compilation error, so that's why this is false option, है ना. तो ये option होगा. And line 4 generates compilation error. We saw that, yes, line 4 generate compilation error, okay. That's why this is correct option, okay. After that choose the correct option. First thing main, है ना, ये अब तक समझ ही गए होंगे, parent subclass है ना. So first it calls obj.fly, it goes to bird, it searches for fly, it finds it, okay, fine. It is not here, so fly is not defined in eagle, so it just calls from here. So this is your first line of output, okay, fine. After that it calls obj.takeoff, so it goes back to bird. बट यहाँ पे देख, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे भी देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ टेक ऑफ, नो डेफिनेशन ऑफ टेक ऑफ. बट स्टिल यहाँ पे ये क्यों सही है? क्योंकि दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास. Abstract class doesn't need to define all methods. It can just defer the implementation to its child, okay. So यहाँ पे void takeoff है, यहाँ पे होना जरूरी है ना, यहाँ पे हमें define करना जरूरी है. This implements flyable, this extends birds, okay, fine. But अरे यहाँ पे होना भी जरूरी है ना. Abstract class में ना भी हो चलेगा,
फाइन. सो टेक ऑफ. यहाँ पे वो इसने सर्च किया, नहीं है. ओके, डजंट फाइंड इन बर्ड, बट बर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सो दिस इज फाइन. ओके, एंड फाइंड द मेथड इन ईगल, सो इट कॉल्स फ्रॉम हियर, है ना. तो इसलिए सेकंड लाइन ऑफ आउटपुट हो गया तुम्हारा. आफ्टर दैट जो नॉट एलिजिबल वाला था, है ना, वही नॉट एलिजिबल वाला था, वही है ना. सेम क्वेश्चन है. सो यू जस्ट नीड टू रिटर्न. ओके, like write a code that will return a अच्छा यहाँ पे देखो, नॉट लोन रिजेक्टेड है ना, एलआर ऑब्जेक्ट तुम्हें रिटर्न करना है. देखो यहाँ पे 45,000 है, यहाँ पे 6,000 है. इसको गलती से कॉल मत कर देना BC2 को, है ना, क्योंकि ये दिस इज ग्रेटर देन 6,000, दिस इज ग्रेटर देन 5,000, 6K इज ग्रेटर देन 5K, है ना. दैट्स वाई ये लोन अप्रूव कर देगा, है ना. सो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या तुम्हें कॉल करना है ना. यहाँ पे तुम्हें B1 पे ही कॉल करना पड़ेगा चेक लोन एलिजिबिलिटी, क्योंकि सिर्फ B1 का ही रिजेक्ट होगा, बिकॉज B1 the salary of B1 that is 45,000 is less than 50,000, है ना. Cool, fine. So let's see, same logic as in the last PYQ. The method we need check loan eligibility is returning an object of type or class LE, है ना, loan eligibility. So since it is the like that, so first method is you need to save in a variable and then call the print loan status. Okay, and print. Okay, this is one way like you saw in the last PYQ, and this is the second way, or you can call directly, because ये जो object return हो रहा है, ये and जो जहाँ पे हम call कर रहे हैं, this object, the definition and everything is contained inside one class only, so it basically becomes a private inner class. Okay, so that's why हम directly call कर सकते हैं. So यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो दूसरा वाला ऑप्शन नहीं है जिसमें हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे. वो अगर वेरिएबल में कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो देखना है. सो यू नीड टू सी द लास्ट PYQ जो मैंने अपलोड किया, तो वहाँ पे मैंने पूरा समझा रखा है, उसमें दोनों ऑप्शन थे. सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, BC1 पे हम चेक लोन एलिजिबिलिटी कॉल कर रहे हैं. दिस रिटर्न्स LR ऑब्जेक्ट, एंड सिंस LR ऑब्जेक्ट इज एन LR मतलब लोन रिजेक्टेड, है ना, इज अ प्राइवेट इनर क्लास, वी कैन डायरेक्टली कॉल डॉट प्रिंट लोन स्टेटस ऑन दिस ओनली. ओके, दैट्स वाई दिस वर्क्स. ओके, फाइन. 33 तक क्वेश्चन है, नहीं 32 तक है. Cool. Okay. यहाँ पे भी सेम तुम्हें एरर देखना है, मतलब एरर आएगा या आउटपुट आएगा. सो मेन है ना, यहाँ पे भी तुम देख लो, पेरेंट सब क्लास वाला लॉजिक तुम देख लेना, एरर नहीं है वहाँ पे. सो फर्स्ट इट कॉल्स r1.read. ओके, रीडेबल में r1.read. ओके, दिस इज फाइन. then it calls यहाँ पे read defined है, so this is fine, and then it goes to document. document में इसने दे रखा है कि read यहाँ पे है, and it also prints the output. So this is your first line of output. Okay, so it just calls this. Okay, now it goes back to readable, but here there is no write function, write method absent. no. भले यहाँ पे है, but interface में ही defined नहीं है ना. So that's why this becomes wrong. ये तुम्हें compilation error देगा, error absent in readable interface. line to generates compilation error because R1 of type readable cannot invoke method write, है ना. फर्स्ट वो readable में देख रहा है, readable में defined ही नहीं है. अगर defined भी होता, like just इस तरह defined भी रहता, so still it would have worked, क्योंकि तुमने definition तो right यहाँ पे दे रखा है, but वहाँ पे नहीं दे रखा, वहाँ पे define नहीं कर रखा basically. So last question, same question as that one. Okay. हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है. फर्स्ट यू कॉल द आइटरेटर, है ना. आइटरेटर यहाँ पे हैज नेक्स्ट इज बेसिकली रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स, एंड गेट नेक्स्ट इज गेटिंग द नेक्स्ट. ओके, वहाँ पे मैंने पूरा समझा रखा है, इसमें मैं जस्ट गो ओवर इट क्विकली. ओके, सो हमें ये आउटपुट चाहिए, तो बेसिकली हमें एट द एंड हमें ये कॉल करना पड़ेगा ड्रॉ. सो सी फर्स्ट इज प्राइवेट, है ना. यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा दैट दिस इज डिफाइंड एज अ प्राइवेट क्लास. ओके, सिंस प्राइवेट क्लास, first we need to cast it as parent and then use the methods. Okay, so we need to cast it as shape, है ना. we need to cast it as shape and then get next to get the shape, like यहाँ पे new circle, red, green, whatever, है ना, whatever we want to. So to get them from the list, and after that at last we need to draw, है ना. इसका मैंने पूरा explanation last PYQ में दे रखा है. पहले हमने क्या किया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी नीड टू कॉल द ड्रॉ फंक्शन ऑन ईच ऑफ दिस, है ना. तो ऑन ईच ऑफ दिस फर्स्ट वी नीड टू गेट द नेक्स्ट. ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, वी गेट नेक्स्ट एंड देन कॉल द ड्रॉ फंक्शन ऑन इट.
बट ये ऑब्जेक्ट है ना, वी नीड टू हैव समथिंग हियर. अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे? द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड, वी कैन डायरेक्टली कॉल the iter. Okay, we can directly call the class itself. Class है ना, we can directly call the class itself. Okay, circle है ना, circle है सारे. Okay, so we can directly call the class. Okay, so ये सबसे पहला हमें दिमाग में आता है, and this would have been fine if यहाँ पे public होता, but since this is private, we cannot call the class directly. Okay, we need to we need to use the parent. Okay, and then call the draw method. Okay, it's fine. So that's the whole point. Okay, so first you need to cast as parent, and then get next to get the next item in list, and then call the draw method. Okay, so first you need to get next, this is getting next, iter.get next is getting the next item from the list that is being cast as a parent, and then draw function is being called on that. Okay, fine, that's all for this video. I'll try to make one more PYQ video, but don't quote me on that. All the best, and these notes are uploaded on the drive. Okay, fine, have a nice day, all the best.